फायदेमंद साबित हो सकता है इन लॉबीज के अंदर। एंड दिस टाइम स्पेसिफिकली अगर आप आज देखेंगे तो कुछ ड्रॉप्स में चेंजेस नजर आ सकते हैं टीम्स के। ओके, एंड उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दे हैव वर्कड अ लॉट ऑन देयर रोटेशंस येस्टरडे। बहुत ही अलग तरीके से रोटेशंस की डिस्कशन हुई है। जस्ट उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दे हैव वर्कड अ लॉट ऑन देयर रोटेशंस येस्टरडे। बहुत ही अलग तरीके से रोटेशंस की डिस्कशन हुई है। जस्ट At the end blank, they warmed up a bit, they were more proactive. You were seeing some splits, good fights. It's not really been that same level of lethality though I was expecting to see from Power. Finally, a hair color that protects from hair breakage. Presenting Schwarzkopf Color Specialist Premium Creme Hair Color with anti-breakage technology powered by moisturizing hyaluronic acid and color-locking Omega-Plex. Experience up to 90% less hair breakage. Schwarzkopf Color Specialist. साइरेक्स थोड़ा सा वो प्रोएक्टिव मूवमेंट दिखाए। साउंड तो आ चुका है, अगर हल्का सा यहाँ पे आगे चल के वो नॉक निकाल लेते हैं तो टेबल्स फ्लिप भी हो सकते हैं। बट चलिए, सब्र का बांध टूटा। टॉक्सी, ये आपने क्या ही नॉक निकाला और बहादुरी के साथ गए टीम एएक्स। कोई जवाब नहीं और नोंगशिंग रेड फोर्स ग्रुप स्टेज का वो फॉर्म आगे लेते हुए इन्हें किया वाइप। ये एक ऐसा स्टार्ट था जो कि चाहिए था नोंगशिम रेड फोर्स को भी। आर्यन एंड द बॉयज, दे वांटेड द सेम, लेकिन वो कहानी बन ही नहीं पाई। पावर के खिलाड़ी चलिए एक एक करके उनके ऊपर भी हावी होते हुए खिलाड़ी। विजन फाइट लेना चाहती है, वोल्ट ने अलाहे को भी पिक कर दिया। पावर के प्लेयर्स को आगे की तरफ को मूव करना पड़ेगा। रैगनार इजी, ये दो खिलाड़ी बचे हैं। इजी गाड़ी लेकर के आ गया। ये वो फाइट ये पनपी थी और उसी के साथ साथ पैराडाइज के एरिया को अपना बनाने के बाद आपने देखा भी कि किस तरीके से वो डोमिनेशन इनफैक्ट वो सामने आया प्लेयर्स के। वो एक फिनिशेस निकाले थे, बट I think he was carrying the team quite a few times. विजन की ये लड़ाई
See what he's able to do here. हमने देखा है सैनहॉक के गेट से काफी ज्यादा There is so much space. The Northwest Island it's so crazy. 4 throws in the hard 10. Further throws coming out for Alter Ego top side of the mountain. Team should know. There is so many locations. I don't know why. पार्टी निकालेंगे आता ये रूल ऑफ थंब है अगर आप Fight spots over. I wonder if it's just they were just running into hot drops. It's just hilarious to me. They get hot drops on ruins as well as Paris. So हिट कर जाती है कहीं पर भी आवाज आई कुछ भी उनको भनक लगी वो एरियाज होल्ड कर लेंगे फिर ओके ये सांप हर किसी को डसते हैं वो राखी प्लेयर्स वो भी इस पूरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं पर आने वाला था अल्फा 7 को देखिए सर्कल जाएगा ऐसा लगता है कि अल्फा 7 इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि सारी चीज का कैंप अल्फा वाले आएंगे और फिर अल्फा 7 आराम से के डीएनए को नहीं करता है जा सकते हैं टूवर्ड फिनिशेस निकालते हैं जवाब इम्प्रूवमेंट अगर आप कहें डे 1 से ग्रुप स्टेज से डे नंबर 3 पे हमने देखा बेहतरीन रिकवरी करी थी और वो फॉर्म को आगे लेके जा रहे हैं वेस्टर्न आइलैंड पे ये फाइट टीम के बीच सेंटर के राउंड है और टीम अरीना टीम के सामने मोलोटॉव डालेंगे तो चीजें कुछ अलग हो सकती थी बना के लिए जोकर बिल्कुल पीछे के एरिया से आए हैं रिंगनम के प्लेयर पकड़ा है या उन्होंने रिंगनम को पकड़ा है जोकर चलिए साबुन तो मोबाइल को क्या वो मोबाइल का देता वो तार वाला नेट सो के नहीं क्या हाँ अरे तुम अगर आप कुछ नहीं कर रहे शॉट लगेगा और रिंगनम का रखिए बहुत भारी मिस्टेक हो सकती है बहुत के रखना पड़ेगा सर्वाइवल स्टेज का आप प्रेशर करना चाहेंगे इससे क्योंकि टीम्स एक दूसरे को रीड तो पहले भी कर रही थी लेकिन ऐसा क्या ये इंस्पिरेशन है कि पहले गेम के अंदर कुछ आप चाहते हैं कि अर्ली सारी को देखो वो खिलाड़ी बड़े अच्छे फिनिश लगभग अपना जो एवरेज का पूरा कर दिया यहाँ से दो फिनिशेस और निकाल रहे थे तो सैनहॉक का गेम बहुत अच्छा कह सकते हैं कि ऑफ मैप रहता है एंड यहाँ पे जाना सही रहता है और ऐसे में सर्कल ने ली करवट अरीना और एक्टिव कार्य की लीड बड़ी सही थी बट टुवर्ड्स द एंड कार्य एक स्पोर्ट्स की बात करें आप देखिए मंगल है बिकॉज ग्राउंड एडवांटेज PUBG के पास भी है और वहां से अगर बच भी जाते हैं क्योंकि नोटबुक और आईएनएफ का आप क्या करेंगे टीम एक दूसरे के आसपास नजर आ रही है लगता है कि वो पूरी आपस में फाइट लेंगे लेकिन यहाँ पर नॉन
और अल्फा लॉन्गशिप अमजद ये एक फाइट लेकर के आए हैं। उसके बाद सारे खिलाड़ी जीवित हैं, उनके हाथ भी गर्म हैं, वो डरने में छोड़ मार सकते हैं, लेकिन अल्फा सेवन के प्लेयर को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। एक्सवाई के ऊपर डैमेज आया, एक्सवाई को स्पॉट वापस से किया गया था रेमो इस समय, और शॉट मिलना चाहेंगे बिल्कुल सामने टॉक्सी को ये तरीके से बातों को यहाँ पे खिलाड़ी कहलाते हैं। ध्यानपूर्वक खेलना पड़ेगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है उसे, इसे मैं करियो और माफियोसो पड़ेगी। थोड़ा सा दूसरी तरफ फाल्कन के प्लेयर्स हैं, दोनों डेस्परेट हैं और दोनों टीमें ये फाइट अपना बनाना चाहेंगी। पूरा हिमलैंड ने पावर पे हमला कर दिया है, वो फाइट जो बहुत समय से होने वाली थी, वो फाइट फाइनली नजर आ रही है। एक अलग सिचुएशन, एक अलग स्ट्रेटेजी पूरे मौके पर मेरे को एक बार के लिए लगा जरूर, लेकिन नजर शायद उससे हमारे पास बड़े और वो खेल ही दिखा था कि बिनी स्पॉट हुए थे, मे बी स्पॉट किया हो या फिर इंफॉर्मेशन में देखे करना पड़ेगा कि वो कमिट करे, शूट करे। आप मेरे को खतरा मंडराते हुए नजर आएगा। तभी राह देख रहे हैं नए सर्कल की, सर्कल का तरफ देखने को मिलेगा पूरा वेस्टर्न एरिया कब्जे में, और ऐसे में मिनी सर्कल के अंदर मौजूद बट काफी अकेले हैं, टीममेट फाइट्स लेनी पड़ेंगी। थोड़ी देर में वो सब फाइट्स आएंगे और बिनीन का पहले भी कमाल कमाल की सरकार उनकी पावर के रखना, उनके पास कोई ना कोई तो व्हीकल है जिससे सेंट्रल एरिया में आना चाहते हैं। शायद अभी ये सबसे सही डिसीजन था कि मल्टीपल टीम्स आप पर हावी हो सकती हैं। अकेले आपका इंफॉर्मेशन हर किसी को पता होगा, बट देन अल्फा 7 तीनों उन्होंने फिनिश रीड करी, उन्हें पता है कि नॉन्गशिम रेड को कोई और टीम में दिक्कत दे रही थी, वो उस फाइट को टीम्स को देखेंगे। शायद बाकी प्लेयर्स का पता चल चुका है, बट रैग्नार यही चीज, एक तो इतनी बड़ी गाड़ी, दूसरे आप अकेले नहीं बच पाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे चाहें तो एक आध फिनिशर्स भी निकाल लें। ये मैच आप कर सकते हो, पहाड़ी टीम के लिए टीम आईजी फाइनली उन्होंने भी कार्रवाई करी, गामा एक्स के खिलाफ वो फाइट की। गामा एक्स भी ये फाइट हो रही है सर्कल के बाहर, जोन का डैमेज पड़ रहा है, जान है शायद पता है क्या था, रियो ने इंफॉर्मेशन दी थी और इस पे डबल डाउन करने की कोशिश भी वो की, और वो सफल भी रहेंगे। पावर ई-स्पोर्ट्स अल्फा लेवल देखिए कैसे एक दूसरे को कवर देते हैं। एक खिलाड़ी ब्रिज पर दूसरे खिलाड़ी को गए, निकाली गई। किनोट्रोप और आयन बहुत समय से यहाँ बैठे हुए थे। यांगॉन गैलेक्टिकोस के प्लेयर्स अब इसी जगह पर जाना चाहते हैं, कोशिश उनकी तरफ से बहुत रहेगी। ये ग्रेनेड सीधा मुंह पर आया, लेकिन दिक्कत देगा होंगे इन मोलोटॉफ के द्वारा। चलिए मोलोटॉफ जरूर एक लेकर के अपने शॉट भी जाते हुए एयूजी पर करेंगे, लेकिन बाहर निकल के ये फाइट एक अलग बैटल बन जाएगी है। आप घूमेंगे और आपके सबको आ जाएगा, और ऐसे में किनोट्रोप शांति से देख रहे हैं कि आप लड़िए, बचेगा हम खत्म करेंगे। यही पीछे की सोच, ये मूवमेंट की सोच टीम आईजी अभी भी हाई ग्राउंड पे मौजूद है,
वो भी अब खतरे से खाली नहीं है। गामा एक्स ठीक उनके बगल में, ऐसे में हो रहा ई-स्पोर्ट्स। इन्होंने ठान लिया कि हम भी अब सर्कल के अंदर प्रवेश करना चाहेंगे, बट अफसोस इसी का ही तो डर था। ओशन कह रहे थे सैंडविच हो सकते हैं, भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं, और अभी टीम के जो स्टार प्लेयर हैं जो ऊपर पूरी जिम्मेदारियां खेल रहे हैं इस समय, बाकी उसको पता है कि कोई ना कोई खिलाड़ी मौजूद है के लिए, तो सीधे के कवर है। ऐसे में टीम फाल्कन चिल कर रहे, बट अब सर्कल के अंदर आना है, नीचे उतरना पड़ेगा। सुपर हीरो सीधा एक खिलाड़ी को लेकर के एक और खिलाड़ी गए। इंटेंस गेम, शायद वो भी नहीं बचने वाले। टीम सब खत्म होना चालू हो चुकी है। थोड़ी देर पहले 13-14 टीम बची थी, अब मैच 9 बाकी है। जी हाँ, और स्क्वाड चाहेंगे क्लिनिक का वो कॉन्फर्मेशन लेना। अल्फा 7 ऐसे में सिर्फ एक खिलाड़ी गवा के 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं। पोजीशन पॉइंट भी मिलने वाली है। उनके ऊपर भी प्रेजेंट है। जंग चल रही है। Towards the end, इन्होंने दम नहीं तोड़ा है। ये मैच जाएगा काफी भयंकर साबित होगा। पूरा डाउन के बचोरी जल्द करना चाहते हैं। Himself to it. This is brutal, bro. Roll up as well. Falcons potentially realizing now's the time to go in. Koa from the sideline spots them. Exchange of points between either team. We say goodbye to Alpha 7. Falcons looking to put themselves in a good spot. Also, Falcons just take down Tizzy there. Honestly. Fair play to the Falcons. This has been an odd game all round. Let's be honest. I think Falcons could have been quicker over towards that north side. There's a lot of teams like Northwest Island that were cut out in that top 8. No doubt, Who were finding the most success there. but it's There goes down over towards my. Literally eats it, chomps down on it. No big deal. Team Falcon, Team That's nuts. A massive grenade right on target, but he barely survives with a sliver of HP. Suddenly, finally, जब मौका मिला है, The difference is, obviously, when you look at the battle of attrition, right? Falcons are the only squad that have 3 players left alive going into this. अच्छा breathing space की. Want to play off one another. Rotate over from Fireflux as well. The arena in position to at least get a shot potentially back on the Redox from the side. के पास utility Ocean Scarface is not. खत्म हो चुकी है. He's a bit of an unknown factor here for these teams because he is incredibly good when it comes to these open sidelines. They also have this ridge to work around. Fireflux are currently inside the circle. Falcons have to push out into that open ground. E-Arena also need to move, but they're close to the circle, so they can afford to wait slightly. You see here, Koa as well as Ralph edging closer and closer. That's a big Molotov. Very, very nicely placed. That's Ralph going down. Koa has to play in the smokes, but there's Scarface. Oh, here he comes. Unloads the magazine, gets it from the connection off Sakura down, sideline back over from Redox, goes both ways. Wave goodbye to E-Arena, leaves us in the final fight with just 2 squads, Fireflux and Falcons. This is fantastic from Koa. He has to immediately start moving up. He knows he can't delay. And I think actually
actually 5 looks what I expected being this close. Like, that was a stellar decision from him. Spotted out from Redox in the back line. Prime nade from Koa, shots back over, calls it quits on the push back up. 2-2's lit. A lot of distance to work with here. Uphill battle, just spots out the head, but it's a quick timing on the peak. Scarface back over, bullets down, heavy tag. The thing is that Redox almost scares him off the position. The Koa was going for with the nade. His nade's coming in quick though. Koa sends a nade down, does good damage over towards Kedge, and Scarface is yet to toss the nade just yet. Good air burst over towards him. Koa's taking 1v1 and Kedge will win it out. The Tommy Titan unloads the magazine, shuts down the first. Redox with a big task ahead of him. Quick peek up over the rock face. Battling back with the DBS, trying to keep them isolated. Giving to 1v1s. He's got the heal in. Quick peek back around. Trying to see if he can play them on the face if they give him an opportunity. Handles it, and they will snatch that one away. It's a dangerous proposition. Scarface will be laying some scars into the battleground there from long range. Give him a sight line, give him an opening, giving him an open field, and it's hard to deal with him. But the Falcons, though, again, cannot give enough praise over towards Koa. He is just making some big movements. I really do think if Redox doesn't take those shots there, potentially that nade goes through. It's a little bit of a miscom, potentially. It might be a case he has to take those shots to keep himself alive, but yeah, frustrating. Definitely frustrating stuff there. It just felt like the pace, very slow burn on that one as well. You can see. Very slow burn on that one as well. You can see. My Lenovo AI says 2 degrees और swing हो सकता है. You can do more with your wrist. Yeah, ऐसे. Let me simulate. Push the ball with your wrist. मैच की सबसे मुश्किल घड़ी, ये विकेट लेना ही पड़ेगा. और ये बॉल, शानदार स्विंग. Lenovo, damn the odds. उनको चाहिए था, बट ये हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ वाली कहानी नजर आ रही है फैल्कन्स के द्वारा. एक और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. YG का अच्छा गेम. See, they're not over-egging it. I don't know if that's going to be a problematic issue though as well, but there just isn't that much level of incident gauges. अगर आपको याद है ग्रुप सीरीज का पहला साइन ऑफ भी उन्होंने डबल डिजिट फिनिश थे दोस्तों, बट इस बार भी 7 फिनिशेस इस गेम में निकाले. अब बस ये देखना है कि यहाँ से कितना कंसिस्टेंट रहेंगे. बट मैच रिपोर्ट इस पहले सर्वाइवल स्टेज के साइन ऑफ की हमारे सामने आती हुई. स्लीपी इसका परफॉर्मेंस ग्रुप स्टेज में बढ़िया था और इस सर्वाइवल स्टेज की शुरुआत भी 4 एलिमिनेशंस के साथ करी है इस इंडिविजुअल ने. डैमेज भी अच्छा दिया. आखिरी खिलाड़ी भी तो बचे थे से जो स्टोन का भी डैमेज दे रहे हैं. बस बाकी फाइट हो रही है. अच्छा फाइट है कि बस सही फायर करके नीचे जा रहे थे जब टीम को मारा था, तो वहां से हर किसी को देख पा रहे हैं. जो नॉक है ये वो फिनिशेस भी उठा रहे थे. इंपॉर्टेंट बात. अब एक ऐसी चीज की बात कर लें जिसकी बात बहुत देर से नहीं करी है. ड्रॉपबैक तो हुआ रोड में, लेकिन रिजल्ट इस बार थोड़ा ऑपोजिट चले गया. या मेरे को शुरुआत करी थी पहले दिन. चल कुछ स्टेजेस की थी, उन्होंने वो फाइट की शुरुआत करी थी और इस बार ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेलने लग गए थे. काफ़ी मौके थे. कुछ बोल रहा था कि वहाँ पे अगर साइलेंस की थोड़ा सा आगे चल के चढ़ जाते वहाँ पे
कंप्लीटली अलग। तो प्रॉक्सी ने देखा क्या कॉन्फिडेंस दिखाया, वो अंदर घुसे, इंस्टेंट स्विच किया, टर्न किया, वो नॉक निकाले। और यस Victory for all teams. बट फायरफ्लैश की अरीना फैल्कन्स इन्होंने शुरुआत अच्छी करी थी। नोंगशिम रेड फोर्स ने आउट ऑफ द सिचुएशन दे वर इन उन्होंने बेस्ट वैल्यू निकाली, मैं तो कहूँ। ओशन मैच के दौरान आपकी अल्फा 7 से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, जिस हिसाब से उन्होंने पोजीशन किया था खुद को, ब्रिज कंट्रोल या शोर लाइन कंट्रोल था, लेकिन मात्र 3 फिनिश निकालने में कामयाब रहे थे। और इसका रीजन भी तो नोंगशिम रेड फोर्स ही है, इस पूरी कॉन्वर्सेशन का भी तेजी से को फिनिशेस निकालते उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा, चलिए एक मैच में आप जिंदगी की तरफ अपनी 50% जिंदगी मुझे नोंगशिम रेड फोर्स दे दी सर, उनके इस तरफ अब्रिज के इस तरफ इस किया, मुझे खेलते हैं मानते हैं नोंगशिम रेड फोर्स के प्लेयर दूसरी जगह चले गए, वो उनके पीछे चले गए, लेकिन एक प्लेयर पीछे रह गया और उसी आखिरी खिलाड़ी ने तो उनको बैक स्टैप किया जब बाकी फाइट हो रही थी। तो जब आपने अपनी आधी जिंदगी एक जगह पर लगा दिया तो फिर आप इग्नोर से रिजल्ट्स कैसे ही एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और बार-बार हम देख रहे थे जब वो ब्रिज के अराउंड खेलते थे, के ऊपर बार-बार पहले में सपोर्ट वो फायर को पीछे से ना कर ले, जब फाइट भी ले रहे थे दिल्ली के खिलाफ, तब भी एक खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद था। बट टुवर्ड्स द एंड समझ नहीं आया कैसे नज़रअंदाज कर दिए, या फिर शायद यूटिलिटीज़ भी मौजूद नहीं थी, क्योंकि आपने देखा होगा जब अल्फा 7 के खिलाड़ी डाउन होते थे स्मोक नहीं डाले गए थे, और पीछे से टीवी का भी 2 वार आ गया और ऊपर से फाल्कन्स भी आ गई थी, तो 2 तरफा वार हो गया सारा पॉसिबल मोमेंट यू लुक समवेयर, और वहीं पे नजर आई दुर्घटना घटने वाली बात होती हुई नजर आई। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, a region notorious for excellence and inflatables apparently here for the Esports World Cup, and we have got ourselves a victory for Fireflux. Impressive stuff from them coming in on Sandhawk and being able to get the dub. Joining me 7 as well as Maxman. Fireflux, man, I mean, they were able to win things out on the eastern side. It was looking a little bit tricky there, Max, but they did make it work. I like Fireflux, man. Rename it Fireflux, man. No, playing Trifecta, there was a lot of teams. I think there was Killertrope, Influence Rage, there was also Owl Point Horror. Just, we don't want to get involved in that mess over there. We'll just wait into the deeper side of Trifecta, wait for all the teams to fight and eliminate each other, and then we transition, claim the high ground to go for the win. It was a clean, executed chicken dinner. I do think other teams maybe showed more potential, but we finally get a Turkish chicken dinner instead of Regnum Kara, which is kind of impressive. I mean, for a team that has a lot of experienced players, this is something you and I were talking about, Max, coming into today, is that we were kind of expecting Fireflux to be a bit of a dark horse today, right? The experience is there. They just haven't really been executing a plan. So for them to get a chicken dinner here, it kind of sends a bit of a red flag to all the other teams that they are here to win it and make it to the grand finals. I mean, because if you tell me how do Fireflux tend to play, passive does not come to mind. Okay, they see you, they chase you down, they get the 4 points. Here they were just playing very slow, which that shows growth for me, that they might be able to make in the top 8. I think something that was cool about their approach towards those final circles is they were hedging their bets. We were talking about how the coastline can be very strong in these kinds of circles, but also you have Scarface North trying to position as if he could potentially take the high ground once the circle shifts come in here, 7. They're like, okay, we can take this high ground, we can leverage this against our opponents, and I think it was really good for them to have options available. Yeah, and at the end, I mean, you saw them being able to react to Koa once Koa was trying to get an angle on them too. Quick reaction, making sure you eliminate them, and now you turn that into a 2v1. Redux was just not going to be able to do much. One team that I did see there towards the bottom of the leaderboard, and I kind of have to call them out, is going to be AXTMG. Once again, with this hot drop on Nonshim Red Force, you could tell Nonshim Red Force does not like that. I mean, they're wondering if it's going to be happening tomorrow. Now, the reason why I bring this team up is because for AXTMG, Sandhawk is usually their best map. Now it's time to put up or shut up for that team and make sure they get points going into Erangel. It's not BMPS, you know, you don't have as many Sandhawks as they have over there. And why do you want to start your best map with a hot drop? Like, I'm sorry, it doesn't matter. You can be good at the map. A hot drop is just pretty much 50-50, and even if you do win it, you might lose players, and you don't have a chance of winning. Well, especially since there's other options than Ruins down there that nobody's at. So you could take the same rotation paths as well, in theory. Yeah, I could see why they did it, especially because remember, they won that first hot drop back in group stage, and then it kind of forced them out. So they're feeling themselves, they're feeling confident. Yeah. They think they're going to do it again, but that was not the case. I'm hoping that one of these two teams is going to be giving up. And if it's any team, I would highly suggest for AXTMG to just step away. You're talking about AXTMG, R8, Yangon Galactico. That was happening in Paradise Resort. I thought it was completely resolved after the group stage, right? We know where all these teams drop. You know these compounds, these cities are overtaken. Why is it happening again when you only have, again, 12 games? You need to make every game count, so this is going to hurt them really, really badly here for the survival step.
Very small sample size of 12 games. And if 2 games on a Sandhawk are going to be aggressive starts and things like that, I would argue in a really long form. Or money market which investment. Matlab regular income which we can withdraw. My Lenovo AI says 2 degrees और swing हो सकता है. You can do more with your wrist. क्या ऐसे? Let me simulate. Push the ball with your wrist. मैच की सबसे मुश्किल घड़ी, ये विकेट लेना ही पड़ेगा। और ये बॉल, शानदार स्विंग। Lenovo, damn the odds. Second is important. Suspects inside. My Lenovo AI says 2 degrees और swing हो सकता है. You can do more with your wrist. क्या ऐसे? Let me simulate. Push the ball with your wrist. मैच की सबसे मुश्किल घड़ी, ये विकेट लेना ही पड़ेगा। और ये बॉल, शानदार स्विंग। Lenovo, damn the odds. मम्मा को सब पता है हम दोनों को क्या चाहिए। मम्मा से हग ना। डार्क फैंटेसी। हाँ पता है। सनफीस्ट डार्क फैंटेसी क्रंची कुकी में मोल्टन चोको, हर टिफिन की स्वीट एंडिंग। Reach your impossible with the AI-powered Legion Pro 7i, Lenovo Legion. He's practically a ghost. Now that we know of him, इसके photos को बाहर निकालो, फिर देखते हैं कहाँ भागता है एक ghost. One man's hero is another man's terrorist. Heroes don't terrorize anyone. The Hunt, the Rajiv Gandhi assassination case, streaming now on Sony Live. सर्वाइवल स्टेजेस का सबसे पहला मुकाबला सैनॉक का मैप अभी कुछ ही देर पहले समाप्त हुआ, लेकिन ये सिर्फ पहला मुकाबला था। मतलब जिन टीम्स की स्टार्ट अच्छी नहीं हुई, aggressive starts and things like that. Island, that wasn't even the case. They weren't even worried about it, and that's the biggest wow moment for me. Is like, you cannot be making these mistakes, especially in an area that they have won games before in PMSL Americas. Yeah, I mean, we could talk about Alpha 7 for a hot minute here. I actually want to highlight Falcons. Like, they knew the value of that underbridge and the coastal area, and they're like, okay, actually, Alpha 7 getting completely destroyed by Tizzy and the off angle over the side of that river. Let's just get an off angle of our own, eliminate them, and then get a very nice entry point into the circle for both Koa and the side, of course, of Red Ox. So I think we've seen a lot more in this one game alone here, Seven, of Falcons than the entirety of the group stage. And for Falcons, one thing that was a little bit sketchy for me was going to end up being just Raouf maybe overextending too much. Yeah, we've got to look out for that. Well, thank you very much, gentlemen. It is time now to head over to the commentators. Game number 2, we change things up and head to the grassy pastures of Baringo. के सर पे तलवार मंडरा रही है। वो तलवार इसी चीज की, आपने अपना एवरेज नहीं बनाया है पहले गेम में, अब आपको उस एवरेज के डबल पॉइंट्स तो निकालने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स निकालना ही पड़ेगा, बट आपको पैकेज बहुत ज्यादा पसंद है उससे नॉर्रा। ऐसे में ये
मिलिट्री बेस पर अभी भी 2 टीमें जाने वाली है, बट विल फायरफ्लक्स डिसाइड टू गो देयर या फिर वो अपने सेकेंडरी ड्रॉप पर जाते नजर आएंगे? ऐसा लग नहीं रहा है कि मिलिट्री बेस पर जा रही है फायरफ्लक्स। इंटरेस्टिंग रहेगा। फायरफ्लक्स अगर सदर्न आइलैंड नहीं जाते हैं, मे बी शायद गाड़ियों का इस्तेमाल करके जाएं या फिर अपना जो कंटिजेंसी प्लान है उस पे वो अमल रह सकते हैं। मैं निगाहें ढूंढ रही हैं कि कहीं पे कोई ड्रॉप क्लैश तो नहीं हो रहा। ई अरीना, इनके हमने मल्टीपल ड्रॉप्स देखे हैं और इस बार इन्होंने चयन किया कि गुड ओल्ड क्वारी और प्रिमोस। कितना बड़ा इलाका इनके कब्जे में, आप देखिए तो व्हीकल्स की कोई कमी नहीं होगी, लूट की कोई कमी नहीं होगी। और ई अरीना ने भी पिछले गेम में ना दाव दिखाया था, काफ़ी लाजवाब खेली थी ये टीम। और टॉप प्लेयर्स की अभी के लिए बात कर रहे तो स्लीपी नंबर 1 चल रहे, टीजी इन्होंने भी पीछे से जो वार किया था उसके चलते उनके भी काफ़ी अच्छे डैमेज नंबर्स हैं। सर्कल बन चुका है ओशन और काटका का ये जोन है। पावर ई-स्पोर्ट्स अच्छा एक स्प्लिट है। पावर को पहला गेम भी उनका डिसेंट तो गया था, तो इस बार भी कोशिश कर सकते हैं कि वो एवरेज उनका मेंटेन हो जाए। पहले गेम के अंदर उनके पास 6 पॉइंट्स आए जो उस एवरेज के आसपास ही रहते हैं। इस गेम के अंदर कोशिश कर सकते हैं। फायरफ्लक्स ऑलरेडी एक एडवांटेज लेकर के बैठ चुकी है। ई अरीना उनके पास पॉइंट्स अच्छे खासे हैं एंड ई अरीना के प्लेयर्स भी प्रिमोस क्वेरी के एरिया पर उतरे हुए हैं। जोकर के पास पूरा क्वेरी है अकेले लूटने के लिए। मॉरमैन की बात करी जाए, वो बैक ऑफ द रोड्स आराम से लूटते नजर आएंगे। फैल्कन्स अ गुड स्टार्ट, वुड हैव बीन इवन बेटर अगर वो चिकन ही मिल जाता, बट कोई मलाल उनको इन सब चीजों में रहेगा नहीं। रेगनम कार्य, हालांकि देखिए रेगनम कार्य 8 पर नजर आ रही है। 8 तो कट ऑफ के लिए आपको जाना है, सो एक गलती साइलस से वो ओहदा छीन सकती है शायद, जिसकी हम पूरी शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं। एंड वाटर सिटी यहाँ पर आर्यन एंड द बॉयज अभी के लिए लूट करते नजर आएंगे। सामने प्यारी सी M4 पड़ी है। टीम एक्स को इस बार सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा और जैसे आपने कहा ना ओशन, इस बार वो रिकवरी भी करनी पड़ेगी, दुगना रिकवरी करना पड़ेगा, यानी एक चिकन डिनर निकालना है। और टीम एक्स स्टार्टिंग साइंस उतने अच्छे थे नहीं। हमें लगा था कि जो मिरामार में चिकन डिनर उन्होंने हासिल करी थी WBG को हरा के एक फेयर 3v3 फाइट में, वो ना कहीं वो कैरी फॉरवर्ड करते थे, बट वो रीसेट एक वापस स्क्वायर वन क्या, 1 पॉइंट नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं। सैनहॉक का वो गेम था और हमेशा वो RNG फैक्टर तो रहता ही रहता है, अगर चेंजेस कर सके। हो रहा है स्पोर्ट्स ऐसे में इनके भी ग्रुप स्टेजेस में ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली नहीं थी। इट वाज ऑल अबाउट स्लीपी। जिगल मैं चाहूँगा स्काई, नो फियर ये भी इस गेम में स्टेप अप करें। 100% उनकी तरफ से स्लीपी अकेले ही
मम्मा को सब पता है हम दोनों को क्या चाहिए। मम्मा से हग पता है। सनफीस्ट डार्क फैंटेसी क्रंची कुकी में मोल्टन चोको हर्टिफिन की स्वीट एंडिंग। आईएनएफ भी एक ऐसी टीम है जिनके बारे में हमने ज्यादा चर्चे किए नहीं है, बट ये ना सोचिए या ये ना भूलिए कि वो भी एक ब्राजीलियन रीजन की टीम है एंड वहाँ पे करियो जैसे अगर खिलाड़ी हैं तो आईएनएफ के प्लेयर्स भी कोई कम नहीं है। ये लोग कमाल की टीम बन जाती है आईएनएफ। डिएगो जो उनके स्टार प्लेयर रहते हैं हमेशा काफी अच्छा खेलते नजर आते हैं। अपने रीजन के अंदर ही इज नोन टू गो फॉर गुड क्लचेस बट ही सर्कल गामा एक्स को फेवर करता हो, बट गामा एक्स के प्लेयर्स गामा एक्स की टीम के स्प्लिट के बीच में दो अलग-अलग टीमें बैठी हुई है। सोचिए कहां पर उनका स्प्लिट है। कोरोना निकालने की कोशिश कर सकता है डीवीएस लेकर के आगे की तरफ को जाते हुए टॉप रो My Lenovo AI says 2 degrees और swing हो सकता है. You can do more with your wrist. ऐसे Let me simulate. Push the ball with your wrist. सबसे मुश्किल घड़ी ये विकेट लेना ही पड़ेगा और ये बॉल के आईजीएल को उड़ाया, आर8 ने बदले में आईएनएफ के आईजीएल को उड़ाया। सबसे अच्छा ये एक चीज देखने को मिली है। अब देखिए आईजीएल जब टेक डाउन हो जाता है उनके पास हर प्लेयर की विजन होती है। एज एन इंडिविजुअल स्पेक्टेट करके हर प्लेयर को खिला सकते हैं। एक अलग मेंटालिटी बनती है, एक अलग माइंडसेट बनता है। तो उसी तरीके से शायद अब दोनों टीम्स खेलना चाहें। लॉ कमाल के आईजीएल है, कमाल के तरीके से अपनी टीम को खिलाते हैं। डिएगो इनके स्टार प्लेयर, उनको जरूर बोला जाएगा फाइट्स लीजिए, आगे जा करके खेलिए उस तरीके से। दूसरी तरफ आर8 प्रेस्टीज का पिक होना अब बाकी टीम के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज खोलता है। और दोनों टीम्स की रोटेशन कितनी अलग हो चुकी है। आईएनएफ ने सीधा जोन में एंट्री मारी और आर8 अराउंड द सर्कल आ रही है। इंटरेस्टिंग रहेगा अभी के लिए, थोड़ा सा वियर्ड सा पेस्ड ये गेम की टीम्स भी फोकस मान्यता दे रही है कि हम पोजीशन एक अच्छी रखें सर्कल के अंदर, अनकंटेस्टेड चलें और सभी